इवनिंग एवरीवन। नाउ हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट में कई टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, लेट मी राइट इट। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ। The second is ALU. The third is memory unit. The fourth is input unit. The fifth is output unit. सो ये 5 पार्ट्स होते हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं हम लोग। इवनिंग एवरीवन। नाउ हम लोग आज पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट। ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट में कई टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, लेट मी राइट इट। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ। The second is ALU. The third is memory unit. The fourth is input unit. The fifth is output unit. सो ये 5 पार्ट्स होते हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं हम लोग। सो डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट का। तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ CU। सो सबसे पहले इनपुट यूनिट है। देन हमारा CU है, ALU है एंड MU है। तो CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, MU का मतलब है मेमोरी यूनिट। देन ये हमारा आउटपुट यूनिट, एंड आउटपुट यूनिट से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इनपुट यूनिट में ये जाता है हमारे CPU को इन्फॉर्मेशन। CPU यूनिट में आपका लाइक कंट्रोल यूनिट है, ALU है, मेमोरी यूनिट है। एंड देन मेमोरी यूनिट से अगर हम लोग डेटा लेते हैं तो वो आउटपुट में शो होता है। एंड आउटपुट यूनिट जो मेमोरी दिखाता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट आपका एक पार्ट ऑफ है मेमोरी यूनिट का। सो फर्स्ट इनपुट यूनिट से हमारा इन्फॉर्मेशन आता है। देन जो कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल यूनिट का क्या इन्फॉर्मेशन रहता है कि वो इनपुट यूनिट से आपका इन्फॉर्मेशन लेगा। देन उसको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है या किसी को पार्ट को भेजना होता है तो वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ये ऑलमोस्ट हर चीज़ को कंट्रोल करता है, कौन सी चीज़ क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी। देन ALU जो है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। लाइक किसी डेटा में कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऑल्टर करना होता है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना होता है, लॉजिकल ऑपरेशन करना होता है, काइंड ऑफ कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो वो आपका ALU में होता है। देन मेमोरी यूनिट क्या करती है, मेमोरी यूनिट आपका मेमोरी में स्टोर करती है। मेमोरी यूनिट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जस्ट लाइक कैची, रैम। सो जो CPU होता है वो एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर CPU का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हार्डवेयर कंपोनेंट में। सो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इंस्ट्रक्शंस जो होता है इनपुट यूनिट से इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी वो रिसीव करता है। सो बाइनरी कहने का मतलब क्या होता है, लाइक 0 1 0 1 आपका बाइनरी में वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है।
एंड उसे मेमोरी में स्टोर करता है। एंड कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस उसे परफॉर्म करना हो या इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना हो तो बाइनरी फॉर्म में पहले उसको डिकोड करता है, देन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है, एंड देन जब उसे सेंड भी करना होता है तो बाइनरी फॉर्मेट में सेंड करना होता है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को परफॉर्म करना होता है, फर्स्ट उसे कंट्रोल यूनिट जो होता है डिकोड करता है, एंड देन वो बताता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस कब परफॉर्म करने होते हैं। देन वो उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो होता है वो डिकोड करके वो बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस पार्ट में सेंड करना है, एंड जो हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं लाइक ALU रजिस्टर, उसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस को भेजता है फॉर फर्दर प्रोसेस। So let us write down the important points. CU is a virtual component of computer. Component of computer. CPU responsible for coordinating and controlling and controlling the activities of various hardware components. सो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस in the form of binary code from memory. It decodes the instructions to determine a specific operation to be performed. सो ये पूरा आपका CPU का स्ट्रक्चर है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के बारे में। सो इन शॉर्ट हम लोग कंट्रोल यूनिट क्या करता है हमारा, कि अगर हम लोग कोई ऑपरेशन देते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें दो नंबर को ऐड करना हो A+B, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि वो A+B की जो वैल्यू होगा वो पहले हम लोग ALU को सेंड करेगा। ALU को सेंड किया, देन जब उसने ALU को सेंड किया तो A+B का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए कि A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है, तो ALU क्या करेगा कि इस 5 + 7 को ऐड करेगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा 5 + 7 जो कि हमारा 12 है, तो इस वैल्यू को ALU जो होगा ऑपरेट करेगा एंड फिर इसको जाके एक मेमोरी में स्टोर कर देगा, जो कि मेमोरी यूनिट का काम होगा। अब इसे करने के दो अप्रोचेस यूज़ करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जिसमें हमारा पहला अप्रोच जो है वो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है। सो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि हम लोग को एक अलग से प्रोग्रामिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग अलग से प्रोग्राम लिखें, कि जैसे हम लोग अगर C प्रोग्राम भी लिखते हैं, C में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसमें INT AB एक दो वैल्यू लेते हैं जो कि फिर यूज़र से हम लोग इनपुट करवाते हैं, देन उसके बाद हम लोग ऐड करवाते हैं एक अलग ऑपरेटर लेके, उसमें उसकी वैल्यू
ऐड करते हैं, देन उसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो ये एक अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन हार्डवेयर में क्या होगा कि ये बेसिकली एक हार्डवेयर कंपोनेंट में पूरा वो सर्किट बना रहेगा एंड उस सर्किट की मदद से ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो इसमें हम लोग को अलग से प्रोग्राम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम लोग हार्डवेयर सर्किट की मदद से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि इट यूजेस अ डेडिकेटेड सर्किट्स एंड वायरिंग टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन विदाउट द नीड फॉर एडिशनल प्रोग्राम्स। सो इसमें हम लोग को अलग से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कराना होगा कि कोई रिजल्ट पाने के लिए। ये ऑलरेडी हार्ड वायर्ड होगा, जस्ट लाइक इट इज़ लाइक अ बिल्ड इन शेफ इन योर किचन हु नोज एग्जैक्टली हाउ टू कुक एवरी डिश विदाउट रेफरिंग टू एनी एक्सटर्नल रेसिपी बुक। ठीक है, सो इसे पहले से ही पता होगा कि कब कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इसके लिए हमें अलग से कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, या अलग से कोई प्रोग्राम हम लोग को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड हर बार हम लोग को कोई प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। ये हार्ड वायर्ड है, ये ऑलरेडी बिल्ड इन है एंड इसे पहले से ही पता है कि कौन से ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने होते हैं। So it is a fixed predefined set of instructions that are directly built into the control unit. So एक बना कैसे रहता है? It is made up of gates, flip flops, decoders, etc. So इन सब चीज़ों से बना रहता है and then ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला एडवांटेजेस ये है कि ये सिंपल है एंड फास्ट है, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट होंगे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के थ्रू जनरेट होते हैं, तो इसलिए वो जो सिग्नल्स होते हैं वो फास्ट होंगे। एंड इसका परफॉर्मेंस भी हाई होगा बिकॉज ये हार्ड वायर्ड है, क्योंकि प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने में उसका एग्जीक्यूशन टाइम, परफॉर्मेंस टाइम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब भी देखना होता है। लेकिन हार्ड वायर में क्या होता है कि वो डायरेक्ट सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड उनके थ्रू ही हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि मॉडिफिकेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें वायर्स को रीअरेंज करना डिफ़िकल्ट होगा। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट मिस्टेक्स, क्योंकि हमारा हार्डवेयर फिक्स्ड होगा। कोई भी क्योंकि उसका मॉडिफिकेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम लोग मॉडिफिकेशंस करते नहीं हैं। सो एंड उसमें मिस्टेक्स पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पॉइंट पे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। सो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ a fixed predefined predefined set of instructions that are directly built that are directly built into the CPU into the CPU। देन एडवांटेजेस क्या हैं इसके? पहला एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है एंड फास्ट है। क्यों? बिकॉज control signals are generated by combinational circuits। सेकंड क्या है? परफॉर्मेंस हाई है, परफॉर्मेंस हाई है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस, पहला, मॉडिफिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, मॉडिफिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट क्यों? क्योंकि रीअरेंज करना होता है, रीअरेंजिंग wires। Then second, difficult to correct mistakes, difficult to correct mistakes, to correct
मिस्टेक्स। सो ये दो डिसएडवांटेजेस हो गए। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हियर द इमेज डिस्प्लेज द हार्डवेयर डायग्राम एंड इंस्ट्रक्शन सेट फॉर अ बेसिक सिंगल बस 12-bit computer system. So this system uses several registers connected by a single internal bus, a RAM module, and an ALU and a control unit. So the key components of the system are: the first is PC, that is program counter. It holds the address of the next instruction to be fetched, and it has an increment plus signal to increase its value by 1. So once one operation is executed, its value is incremented by 1 to fetch the next instruction that is stored in the PC. And now the next component is MAR. So what is the full form of MAR? That is Memory Address Register. It holds the address for the RAM module. Data from the bus is loaded into the MAR via the load MAR. सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है कि ये एक मेमोरी स्टोर करता है इंटरनल मेमोरी में. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इज रैम, that is random access memory. It stores the data and instruction that is accessed using the address in the MAR. The next is MDR, that is memory data register. It temporarily holds the data that is to be read or written into the RAM. It has a load and enable signals. So it has two signals, that is LD, that is load, and enable signal, that is ED. Now the next unit is ACC, that is accumulator. It is a general purpose register that is used for arithmetic and logical operations. Next is B register. It is another general purpose register that can be used in operations. The next is ALU, that is arithmetic logical unit. It performs operations like addition, subtraction on data from the bus and register B, storing the result in accumulator. So it performs operations that is performed on register B and ACC. So like we have to perform an addition operation on register B like A plus B. So we perform operations on register B, and then we store the result into accumulator with the help of ALU. The next unit is control unit. It is a hardwired or microprogrammed unit that generates the necessary control signals, that is LD, ED, LM, IP, etc., to orchestrate the execution of instructions. Now we will learn how to write the control signals for these units. So the control unit manages the flow. The control unit manages the flow of data within the processor by generating a specific control signals at the precise moments in time. So the instruction register and the decoder, that is the opcode of an instruction, is stored in the instruction register and then interpreted by the instruction decoder. Ring counter, this component provides the sequence of timing signals, that is T0 to T5, that orchestrate the execution phase such as fetch, T0, T1, T2. Then control signals, the generated signals, that is IP, LP, EP, LM, RW, LD, ED. These govern the operation of other components in the computer like loading registers or enabling the ALU. Now the instruction set, these units support several basic instructions including LDA, add, sub, MBA, jump, JN and halt, etc. Now if we have to write the control signal for IP, then what we write? That is T2. In fetch it is only T2. So the control signal for IP is only T2. For LP we write that is T3 and multiplied by jump
because it is present in front of the jump statement. And next is T3 into NF into Jn. So this is the signal for LP. Now if we write next for EP, then it is only T naught. So for EP, it is only T naught. For LM, it is T naught plus T3 into LDA plus T3 into STA. So this is the control signal for LM. For R, we write T1 plus T4 into LDA. T1 plus T4 into LDA. For W, we write T5 into STA. For LD, it is same T5 into STA. For ED, it is T2 plus T5 into LDA. And the last example, if we write, that is E1, sorry, it is T3 into LDA plus T3 into SDA. So this is how we write the control signals for the operation to be performed. Now we will see about the table instructions. So the first table instruction is LDA, that is load accumulator. So if we write instruction something like load in accumulator B. So what does this statement means? It means that in accumulator, memory of B register will be loaded. So this is the meaning of LDA. So it will load the content of the memory address specified the operand into the accumulator. Now STA is store accumulator. It stores the content of the accumulator into the memory address specified by the operand. So if we write the instruction like load B into accumulator, so it means that in memory of B is store accumulator. So it will store the memory of accumulator in the memory of register B. Now the next instruction is add. So if we write instructions, so it is third instruction, it is first, it is second. So if we write instruction like add accumulator and B, so it means that in accumulator, add the content of accumulator with the memory of B. So this is the meaning of third statement. Now subtract. It subtracts the content of the memory address from the accumulator, storing the result in accumulator. So if we write a statement like subtract accumulator and B, so what does it mean? That in accumulator it will subtract the memory address of B and it will store the resultant result in the accumulator. So the next instruction is MBA, that is move accumulator to B. So it will copy the value from the accumulator and it will store it to the memory B. The next is jump to address. So it will unconditionally changes the program counter to the specified address, altering the flow of execution. The next is JN, that is jump if negative. It changes the program counter to the specified address only if the negative flag. So the first bit of the accumulator is set. And the last is halt.
it will stop the computer clock, ending the execution. And the last one is ninth, that is fetch. This is the initial phase of every instruction cycle where the next instruction is received or retrieved from the memory and loaded to the IR, that is instruction register. So this computer architecture is a basic model instruction cycle where the next instruction is retrieved from memory and loaded. Now we will see microprogram control unit. So we can say that microprogram control unit is implemented by using programming approach. Now what does it means? It means that you have to write programs for performing any kind of operation that you want to perform. So just like that, for example, if you want to perform the operation of a plus b, then you have to write the program for that operation. If you want to perform operations like multiplication, division, modulus, or any kind of logical operations or arithmetic operation, then you have to write separate code for each operation. And for every new operation, you have to write code for that particular operation to be executed. So, in a microprogrammed control unit, the control information is stored in the control memory. So now what is control memory? It is a program to initiate the required sequence of micro operations. So this control unit have its own separate memory base that is called control memory. And in that control memory we have sequence of micro instructions which perform the micro operations that is carried within them. So we can say that the control information or the control instructions that are needed to be performed is stored in the control memory, which executes the sequence of micro operations. So control memory contains microprograms, that is sequence of micro instructions that specifies sequence of micro operations. So let us write down the important point, that is control memory contains microprograms which is sequence of micro instructions micro instructions that specifies sequence of that specify sequence of micro operations. Now we can say that a microprogrammed control unit is a control unit in which the control signals are stored in the form of binary, that is 0101, as control word in ROM chip, that is control memory. So every control unit instructions are stored in a control memory in the form of in the form of zeros and ones. So it is stored in control memory. Now each control word in control memory contains within it a micro instruction. So every word that is a particular length of word, that is 10110 for example. So if we consider as a word 1, then it contains a micro instruction within itself.
So the micro instruction specifies one or more micro operations for the system. So it contains micro instructions, micro instructions, and these micro instruction can be more than one. So we can say that a particular micro instruction word contains more than one micro operations that is to be performed on that system or by the system. And the sequence of micro instructions, like we have more than one micro instructions within ourselves, and these collections of micro instructions are known as micro operations. And execution of these micro instructions are responsible for the generation of set of control signals. The control memory is assumed to be in a read only memory, that is ROM, within which all the control information is permanently stored. The address where these micro instructions are stored is termed as control memory, and it is generated by microprogram sequencer with the help of instruction register. So this is the diagrammatic view of the control memory. So we can see that in control memory we have micro operations, set of micro instructions that we called as micro operations, and these are stored row by row, and we can see that this is a control word, and if we decode it with the help of a decoder, then we get the micro operations that is to be performed on the system. So now what is the task of a microprogrammed control unit? So the main task of a microprogram control unit is to first is micro instruction sequencing, and the second is micro instructions execution. So sequencing means we have to sequence these micro instructions one by one so that their order is maintained, and next is execution, that we decode this control word and we get the micro operations that is required to be operated. So now how we achieve this? We achieve this with the help of a micro program sequencer that generates the address of micro instructions according to the instruction stored in the instruction register, that is IR. So basically first we note down the task that is performed by a microprogrammed control unit. So it performs two things, that is micro instruction sequencing, micro instruction sequencing, and second micro instruction execution. So these are the two things that is performed. Now this is microprogrammed control unit block diagram. So we can see here it is instruction register. Then after fetching the instructions from the instruction register, we go through the next address generator that contains the address of the next micro instructions that is to be executed. Then we have the control address register that contains the micro instructions to be performed. Then we have the control memory where the micro instructions are sequenced and executed. Then we have the control data register that contains the specific micro operation to be performed. And
Then we have the decoder to decode the micro instructions, and we get the micro operation to be performed. So this is the whole block diagram of the microprogrammed control unit system. So we write down the important points, that what is CAR, that is control address register. So it contains the address of the next micro instructions to be executed. Second, that is control data register, contains micro instructions to be executed. Then third, the sequencer determines the next address from the control memory, and control memory where micro instructions are stored. So the next address generator is called the microprogram sequencer, as it determines the address sequence of the micro operations that is to be performed and is read from the control memory. The control address register, it holds the address of the next micro instructions to be read, that is MUPC, that we called as microprogram counter. Then we have the control memory. It contains the set of micro instructions. Micro instructions contains a control word that specifies one or more micro operations through generated control signals. When address is available in the control address register, the sequencer issues read command to the control memory. After issue of read command, the word from the address location is read into the control data register.